सो hey you, what is up guys? Hope you guys are doing absolutely fit and fine. Boom. So नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो गाइज आज हम करने वाले हैं एक एलईडी लाइट को रिस्टोर। तो गाइज एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे घर पे बहुत दिनों से लाइक 1-1.5 साल से एक एलईडी लाइट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिस्टोर किया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो गाइज इसको रिस्टोर करना एकदम सिंपल है, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो इसका डायग्राम है मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो वीडियो में आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा और जो कंपोनेंट और जो चीज़ें मैंने यूज़ की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। सो गाइस ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, आपको पता ही है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्या क्या करना है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो कर दीजिएगा। इतना गर्मी में इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए इस वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा। और चलिए गाइस शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। और हाँ, इंट्रो मैंने हाल ही में डिज़ाइन किया हुआ है, तो प्लीज़ बताना कि मेरा इंट्रो कैसा था। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। बूम। To say the least, so far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. Just let me fall to my Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. Pessimistic from the past, all the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. To kill it. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let me in my heart.
if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. If I should stay or be alone. I don't wanna be alone tonight. I'm just hoping that you'll be just right. And I hate that I never really know if I should stay or be alone. सो गाइस देख सकते हो जो हमारा एलईडी लाइट है वो फुल चार्ज करने के बाद और पूरा रिस्टोर करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। और हाँ गाइस, यहाँ जो चार्जिंग पोर्ट है ये आप देख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे पहले से होल किया हुआ था तो मेरे को चार्जिंग के लिए वहाँ पे होल लगाना नहीं पड़ा, तो इसलिए होल अच्छे से था तो मैं इसको लिया। तो गाइस और एक बात कहना था कि ये देखिए मेरा एक पॉपआउट हो गया था वीडियो में, फोकस था। यहाँ पे जो मैंने छोटा सा एलईडी लाइट यूज़ किया था वो शायद फ्यूज था या पता नहीं क्या था, मेरे को चेक करने का टाइम नहीं मिला, तो वो ग्लो नहीं कर रहा था, यहाँ स्विच मतलब कि जल नहीं रहा था, तो कुछ हुआ होगा, फ्यूज हुआ होगा या फिर क्या पता नहीं चला मुझे, तो फिर मुझे वो चेंज करना पड़ा। तो कुछ कन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो एलईडी लाइट बस मैंने लाइट को चेंज किया है, बाद बाकी का जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा ही रहेगा। तो ये जब फुल चार्ज हो चुका है और आप लोग को मैं एक बार जला कर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो कितना पावर है अभी। हाँ जितना अभी दिन में है तो इतना रोशनी नहीं दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो मैं इसको रात को भी आप एक बार चेक करके दिखाता हूँ रात को। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि अभी जो है वो अंधेरा है, तो मैं अभी ऑन करने जा रहा हूँ अपने एलईडी लाइट को, उसके बाद आप लोग देखना बहुत ही अच्छा खासा इसमें ब्राइटनेस है। चलिए अभी हम क्या करें, इसको ऑन कर लेते हैं। वो देख सकते हो मैंने ऑन कर लिया और आप लोग विजिबिलिटी देख सकते हो कितना अच्छा है। और हाँ गाइस, अगर फ्लैश लाइट जलता है इसमें तो इस लाइट के ऊपर भी मतलब मोबाइल का फ्लैश पड़ता, आप लोग देख लेगा कि देखो अगर फ्लैश लाइट पड़ता तो इसमें दिखाई देता ज़रूर, लेकिन मैंने फ्लैश लाइट जो है तो ऑफ करके रखा अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट पे। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस दे रहा है मेरे सेटअप को। ऊपर देख लो आप चारों साइड मेरा सेटअप है, जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा साथ में एडिटिंग का सेटअप भी यही है। तो गाइस कमेंट में बताना कि इसका ब्राइटनेस कैसा है। तो गाइस ये जो एलईडी लाइट है ये मेरे को 5 से 6 घंटे का बैकअप दे रहा है। आप लोग भरोसा नहीं करोगे, लेकिन ये बात सच है कि मुझे 5 से 6 घंटे का बैकअप दे रहा है और मैं इसे 4-5 दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ। और हाँ गाइस मैं बता देना चाहता हूँ
कि जो इसका एवरेज है या फिर जो बैकअप है इसका, वो बैटरी की क्वालिटी और एम्पियर पे मतलब कि डिपेंड होता है। अगर आपके पास अच्छा सेल और अच्छा खासा एम्पियर का लिथियम आयन बैटरी है तो आपको बैकअप अच्छा मिलेगा, वरना तो आप समझ ही सकते हो। तो मेरे पास जो था वो था सैमसंग का लिथियम आयन बैटरी, जो कि था 2000 mAh का, तो इसलिए मेरे को बैकअप अच्छा मिला है। तो आप भी अच्छा सेल लगाइए, बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लगाते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा अच्छा सेल लगाइए, तो इससे अच्छा बैकअप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो गाइस वीडियो को कैसा लगा, होप अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लीव अ लाइक, शेयर द फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब नाउ। तो गाइस चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए, अभी कोरोना चल रहा है तो आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुद का भी ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल जरूर रखिएगा। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा, हैव एन अमेजिंग डे, बूम।